हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एज ऑल ऑफ यू नो दैट हमने अभी तक 8 सेट्स किए मॉडर्न हिस्ट्री के, और जिन्होंने वो नहीं देखे हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना के हैं। और आज हम कर रहे हैं सेट 9 मॉडर्न हिस्ट्री का, राइट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द खेदा पीजेंट्स ग्रीवेंस वॉज अगेंस्ट, जो खेदा सत्याग्रह हुआ था, जो खेदा के किसान थे, उनकी ग्रीवेंस किसके अगेंस्ट थी। ऑप्शन ए यूरोपियन प्लांटर्स, ऑप्शन बी मनी लेंडर्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ द अबो। चूज द राइट ऑप्शन। खेदा पीजेंट्स की जो ग्रीवेंस थी किसके खिलाफ थी, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट के खिलाफ। द खेदा पीजेंट्स ग्रीवेंस वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. द peasants of Kheda signed a petition calling for the tax for this year to be scrapped in wake of the famine. The government in Bombay rejected the charter. They warned that if the peasants did not pay, the lands and property would be confiscated and many arrested. ठीक है, फेमाइन आया था और वो चाहते थे कि उस साल का जो टैक्स है एज पर द रेवेन्यू कोड वो माफ किया जाए। ठीक है, शाबाश। मूविंग फॉरवर्ड, the Jallianwala Bagh massacre took place when government troops fired on an unarmed assembly of people who had gathered to protest against the Rollout Act, the martial law imposed in Punjab, against the high-handed behavior of General Dyer, the arrest of two popular leaders Saifuddin Kishlu and Satyapal Malik. जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, वहाँ पे जो ट्रूफर्स ने फायरिंग की अनआर्म्ड क्राउड पे, ऑब्वियसली वहाँ पे तो बैसाखी के लिए वो जमा हुए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आए थे भी प्रोटेस्ट करने के लिए। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चूज द राइट ऑप्शन, एंड यस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Jallianwala Bagh massacre took place when government troops fired on an unarmed assembly of people who had gathered to protest against the arrest of two popular leaders. सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल मलिक को अरेस्ट किया गया था, इसी वजह से वो जमा हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। द जलियांवाला बाग मैसेकर, आल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर, took place on 13th April 1919. A large peaceful crowd had gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab to protest against the Rollout Act and arrest of pro-independence activists Saifuddin Kishlu and Satyapal Malik. Moving forward, the main purpose of the Round Table Conference in 1930-32 was to discuss the report of Simon Commission, get all the parties to agree to a constitution for India, discuss ways and means of reducing communal disagreements, discuss all the above. जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उनका मेन पर्पस क्या था? क्या साइमन कमीशन को डिस्कस करना था, या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए पार्टीज़ को मनवाना था, या कम्युनल डिसएग्रीमेंट्स को कम करना था, या इन सारी चीज़ों के लिए? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो मेन पर्पस था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वांट टू डिस्कस द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दिया था साइमन कमीशन ने। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई 1930 से 32 से 30 से लेकर 32 तक, were a series of peace conferences organized by British government and Indian National Congress was participant to discuss constitutional reforms in India. These started in November 1930 and ended in December 1932. Got it? बेसिकली कांग्रेस जो थी, नेशनल कांग्रेस, उन्हें सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, और उनको रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम पे महात्मा गांधी, और वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी सरोजनी नायडू. द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज डेडलॉक्ड ऑन द माइनॉरिटीज इशू, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, द कांग्रेस डिमांड फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, द कांग्रेस डिमांड फॉर कंट्रोल बाय इंडियंस ओवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें डेडलॉक क्यों आया था? क्योंकि माइनॉरिटीज़ का कोई इशू था, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला इशू था, या कांग्रेस की डिमांड थी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, या कांग्रेस डिमांड फॉर कंट्रोल बाय इंडियंस, उन्हें बोला था डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस पे हमारा कंट्रोल चाहिए. सो ऑप्शन ए, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे. वो बोल रहे थे कि हमें जो है माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाए, फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड भी दिया गया. द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज डेडलॉक्ड ऑन द माइनॉरिटीज़ इशू. The conference was deadlocked on the minorities issue, for separate electorate was now being demanded by the Muslims, Dalits, Christians, Anglo-Indians and Europeans, etc.
The result was that the conference ended on December 11, 1931 and Gandhi came back to pavilion without any score. तो इसलिए फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. Who attended the second who attended the second round table conference as the representative of the Congress? Who attended the second roundtable conference as a representative of Congress? Motilal Nehru, Gandhi ji, both A and B non-obvious. किसने represent किया second roundtable conference as a representative of Congress? So obviously Gandhi ji ne. Gandhi ji attended the second roundtable conference as a representative of Congress. It failed to reach an agreement either constitutionally or on communal representation. The government failed to concede the basic Indian demand of freedom, and Gandhi ji returned to India on December 28, 1931 and decided to resume the civil disobedience movement. Got it? A women's division of Indian National Army was named after Chand Bibi, Alia Bai, Rani Jhansi, Rani Gindun Liu. तो जो इंडियन नेशनल आर्मी में एक वुमेन्स डिवीजन बनाया गया था औरतों के लिए, उसका नाम किसके नाम के पे रखा गया था? सो ऑप्शन सी, झांसी की जो रानी थी ना उसके नाम पे रखा गया था, जो लक्ष्मी बाई रानी, जो रानी लक्ष्मी बाई थी. A women's division of the Indian National Army was named after Rani Jhansi. The Azad Hind Fauj, also known as Indian National Army, the fighting unit that Netaji Subhash Chandra Bose famously raised, had within it the Rani of Jhansi Regiment (RJR), an all women infantry combat unit. Got it? Okay. On February 20, 1947, British Prime Minister Clement Attlee announced what deadline to solve issues for granting of independence to India? कौन सी डेडलाइन उन्होंने दी थी? जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948, अगस्त 1948. And yes, the right answer is option C. The correct answer is option C. Clement Attlee had declared India will get independence by 30th June 1948. Clement Attlee announced on 20th February 1947 that the British government would grant full self-government to British India by 30th June 1948 at the latest. Where were the Ghadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War I based? North America, South America, West America, Central America. जो गदर पार्टी थी ना उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था और वो कहाँ से काम कर रहे थे? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, नॉर्थ अमेरिका. गदर revolutionaries were based in San Francisco and branches along the US coast and in the far east. Got it? Okay. Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? ठीक है, किसने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो किसने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931? So the right answer is option D. Pandit Jawaharlal Nehru has drafted the resolution of fundamental rights and economic program. The Karachi Congress session, which was held on March 26 to 31, 1931, was chaired by Sardar Vallabhbhai Patel. Okay. Who among the following was not associated with the formation of UP Kisan Sabha in February 1908? ऑल इंडिया किसान सभा बना था फिर 1936 में, है ना? तो यूपी किसान सभा जब बना फरवरी 1918 में बना था ये. तो इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं था? गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा नारायण द्विवेदी. So the right option is option C. UP Kisan Sabha was set up in February 1918 by Gauri Shankar Mishra and Indira Narayan Dwivedi. Madan Mohan Malviya supported their efforts. By June 1919, the UP Kisan Sabha had 450 branches. Other prominent leaders include Junguri Singh, Drupal Singh and Baba Ramchandra. ठीक है. In which of the following provinces was a Congress ministry not formed under the Act of 1935? Bihar, Madras, Orissa, Punjab. So the right answer here is option D, Punjab. In Assam of the following provinces, Congress ministry was not formed in June 1937. पंजाब में नहीं बनी थी. पता नहीं इसने क्यों लिखा है ये.
ठीक है. At which Congress session was a working committee authorized to launch a program of civil disobedience? Tripuri, Lucknow, Lahore, Mumbai. ठीक है. At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? Tripuri, Lucknow, Lahore, Mumbai. So the right answer here is option C. At Lahore session of 1929, President Jawaharlal Nehru, the working committee was authorized to launch a program of civil disobedience. Who among the following started the newspaper Shom Prakash? Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Surendranath Banerjee, Ishwar Chandra Vidyasagar. Yes, the right answer is option D. Ishwar Chandra Vidyasagar started the newspaper Som Prakash. Ishwar Chandra Vidyasagar, CIE, born Ishwar Chandra Bandyopadhyay, was an Indian educator and social reformer of the 19th century. Okay, shabash. Who among the following started the newspaper called Voice of India? Dadabhai Naruji, Bikaji Kama, Viri Sarvarkar, Lala Hardiyal. Option A, Dadabhai Naruji started the newspaper called Voice of India in New Delhi. Voice of India is located, which concentrates in Hindu nationalist books and is one of the important tools in the development of Hinduism ideologies. Okay. Who among the following organized the defense in the trial of Indian National Army officers Captain P.K. Sehgal, Captain Shahnawaz Khan and Captain G.S. Dillon? ऑप्शन ए गणेश वसुदेव जी.वी. मौलांका, जिसको हम बोलते हैं गणेश वसुदेव मौलांका, जो कि फर्स्ट स्पीकर थे हमारे लोकसभा के. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, बुलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय. And yes, the option C is the right answer. Bulabhai Desai organized a defense in the trial of Indian National Army officers Captain P.K. Sighal, Captain Shahnawaz Khan and Captain G.S. Dillon. Bulabhai was the leading counsel for the defense of Indian National Army officers. Shahnawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and Gurubaksh Singh Dillon. The court-martial hearing began in October 1945 at the Red Fort. Okay. During the national movement, the Congress passed a resolution on fundamental rights and economic policy by way of major concession to placate the left wing at which one of the following sessions? Lucknow session, Amritsar session, Tripuri session, Karachi session. हमने ऊपर अभी पढ़ा है. So the right answer here is option D. The Karachi resolution was passed by the Indian National Army at this, Indian National Congress at its Karachi session in the year 1931. Sardar Vallabhbhai Patel was the president of the session. The resolutions on the fundamental rights and new economic policy were passed in that session. Got it? Okay. Shabash. In the 1907 session of the Congress at Surat, whose name was proposed by extremist group at the next president of the Congress? Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal और Aurobindo Ghosh. और उसको सूरत स्प्लिट भी हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का. एंड यस, ऑप्शन बी इज हियर द राइट आंसर. बट आई थिंक तिलक का बोला था. बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस में होना चाहिए था. सो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ए एंड बी, क्योंकि इन 1907 सेशन ऑफ द कांग्रेस एट सूरत, लाला लाजपत राय वाज प्रपोज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. इन सूरत सेशन द रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, दे वांटेड लाला लाजपत राय और तिलक. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वो असल में चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट हो एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. एंड मॉडरेटर्स सपोर्टेड राज बिहारी घोष. Raj Bihari Ghosh to be the president, but Lala Lajpat Rai stepped down and Raj Bihari Ghosh became the president. ठीक है? Okay. In the Nagpur session of the Congress in the year 1920, who among the following moved the main resolution on non-cooperation? C.R. Das, Motilal Nehru, C. Rajagopalacharya, Madan Mohan Malviya. And yes, option A. In Nagpur session of the Congress in the year 1920, C.R. Das moved the main resolution on non-cooperation. At the Nagpur session of the Congress in 1920, देश बंधु मतलब जो इसको बोलते हैं C.R. Das moved the main resolution on non-cooperation movement. ठीक है. In that movement, the surrender of titles, the boycott of schools, courts and councils, the boycott of foreign goods, the promotion of maintenance of a Hindu-Muslim unity and strict non-violence was adopted.
At the beginning of the 20th century, who among the following published the economic history of India? M.G. Ranade, Mahadev Govind Ranade, Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Nehruji, Ramesh Chandra Dutt. ठीक है? And the answer is option D. The economic history of India किसने publish की? R.C. Dutt ने. At the beginning of 20th century, Ramesh Chandra Dutt published the economic history of India. R.C. Dutt, Ramesh Chandra Dutt is the pioneer of economic nationalism. Got it? Okay. The cabinet mission plan cabinet नहीं होगा, cabinet mission plan for India envisaged federation, confederation, union of states, unity form of government. कैबिनेट मिशन प्लान ने इंडिया के लिए कौन सा जो है प्लान किया था स्ट्रक्चर? सो ऑप्शन ए, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया envisaged a federation. The cabinet mission plan formulated by group proposed a three-tier administrative structure for British India with the federal union at the top tier, individual provinces at the bottom tier, and groups of provinces at the middle tier. The Operation Polo was associated with the annexation of one among the following princely states into Indian Union: Hyderabad, Travancore, Junagadh, Kashmir. So the right answer is option A, Hyderabad. Operation Polo was a code name for the police action against the princely state of Hyderabad in September 1948 by the newly independent Republic of India. The Indian Army marched into Hyderabad following the outbreak of hostilities, overwhelming the Hyderabadi military and annexed Hyderabad into the Indian Union. Got it? Who among the following leaders escaped from the prison and organized underground activities during the Quit India movement? Ram Manohar Lohia, J.B. Kripalani, J. Prakash Narayan, Achyut Patwardhan. ठीक है? Okay. So the right answer here is option C. J. Prakash Narayan was the leader who escaped from prison and organized underground activities during the Quit India movement. He, along with Ram Manohar Lohia and Aruna Asif Ali, took charge of the ongoing stir when all the senior leaders had been arrested. Okay. Who among the following had led the Swadeshi movement in Delhi? Ajit Singh, Sayyid Haider Raza, Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak का जो एरिया हमेशा रहता था वो महाराष्ट्र, क्योंकि वो वहाँ से ही थे, पुणे. और लाल लाजपत राय पंजाब वाला एरिया था इनका. ठीक है? अजीत सिंह भी लाल लाजपत राय के साथ ही होते थे. सो यहाँ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सईद हैदर रजा हैड लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली. गॉट इट? ओके. Who among the following had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? C.R. Das, Bipin Chandra Pal, Annie Besant, Madan Mohan Malviya. So the right answer here is the option A. At the Nagpur session of the Congress in 1920, C.R. Das moved the main resolution of the non-cooperation movement. In that movement, the surrender of titles, the boycott of schools, courts and councils, the boycott of foreign goods, promotion of maintenance of a Hindu-Muslim unity, and strict non-violence was adopted. Got it? Okay. Which one of the following observations is not true about the Quit India movement of 1942? It was a non-violent movement. It was a spontaneous movement. It was led by Mahatma Gandhi. It did not attract the labor class in general. So option A, it was a non-violent movement. ये non-violent नहीं थी, इसमें violence create हो गई. Right? Okay. Give the correct chronological order of the events: formation of Muslim League, formation of All India Untouchability League, All India Trade Union Congress, and formation of Indian National Congress. देखो chronologically आपको बोला पहले कौन सा बना फिर कौन सा बना. मुस्लिम लीग बना था 1906 में. Got it? And I think trade union बना था शायद 1920 में. All India Congress बना था 1885 में. I think this one 1932. सो सबसे पहले कांग्रेस और उसके बाद मुस्लिम लीग. सो 4-1 ऑप्शन डी में आता है. 4-1 उसके बाद 3 उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा. तो ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आएगा. लेट अस चेक. गॉट इट? ओके. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले हुआ था 1885 में. गॉट इट? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था 1906 में. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था 1920 में. फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बना था 1932 में. ये चेक करें ना ठीक है कि नहीं. और अगर हम किसान सभा की ऑल इंडिया किसान सभा की बात करेंगे वो 1936 में बनी थी.
ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PDF। यस, सो लेट मी टेल यू हियर, हमने 9 पार्ट्स किए मॉडर्न हिस्ट्री के। सॉरी, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि नहीं, फिर भी एक क्लास आनी चाहिए, क्योंकि एक रिदम बना है बहुत टाइम से, बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और स्पेशली द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। हमने इससे पहले 8 पार्ट्स की, ये 9th पार्ट है। आई थिंक हमने बहुत सारी मॉडर्न हिस्ट्रीज में डिस्कस की विद एक्सप्लेनेशन। उससे क्या हो गया, आपको याद हो गया, कि रिपीटेशन हो गया बहुत सारी चीज़ों का। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इसके बाद या मैं कंटिन्यू करूँ मॉडर्न हिस्ट्री को, या आपको मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसमें और लेक्चर्स आएंगे। बट यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको अब सेट 10th चाहे 11th और कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, या आपको मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए। और सबसे पहले मेडिवल चाहे एंशिएंट चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि जितने आपके कमेंट्स होंगे उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी फर्दर लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, बाकी लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू राइट कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो स्टे ब्लेस्ड।